Hello everyone. Hello, sir. How are you? Good year. I was having a late lunch today, that's why I had to postpone this a bit. Mm, Hello. Good. Am I audible? Yes, Yeah, yes. you are audible. Great. Chalo, let's start then without any delay. So, how was the week, by the way, for everyone? Good, bad? सर बहुत जल्दी एग्जिट कर गए लॉन्ग से एटलीस्ट आई कुडंट होल्ड ऑन No worries. आएगा वो भी दिन जब पूरा होल्ड करोगे. Takes time. But keep learning. See, week on week, we are doing this webinars. And almost I can say, like, I can count on my one hand fingers the times when the predictions have been wrong. Late December and somewhere, I guess, was in October. That is the only time the predictions have been wrong. Means total maybe 2 or 3 weeks. Rest every week, things have exactly worked out the way it has been discussed in webinar, be it index or stocks or whatever. So starting with it is was chalo different that people were taking time to understand, but at least for people who are since long time, I'd really consider it that this is the high time that you guys start making good amount of money, because still if you are missing trade, then actually you are learning nothing. You're just repeating the same thing day in day out then. So start by repeating what has been taught in the courses and things like that, and stop repeating your mistakes. High time you guys on good money. ओके, कब तक मैं बोलता रहूंगा ट्रेल करना चाहिए, अरे मिस हो गया, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, नहीं तो फिर that becomes a habit. Anyway, let's start today. सर आप जब जैसे मैंने अभी एक चीज देखा मैंने आपने उस दिन वो बैंक निफ्टी का कॉल दिया था उसके पहले पुट था जिसमें अपने मोस्टली नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट किए तो आपने Hmm. रिवर्स किया सो इज दैट अ प्रैक्टिस व्हिच यू सजेस्ट टू ऑल ऑफ अस आल्सो बिकॉज़ इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस बट वन हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी अलर्ट Yeah, वरना don't नहीं हो do it पाता right है now. It takes time. Okay, don't do it right now. Call put me to I am saying that don't trade unless and until I give the trade. Okay, once you are that good that you can understand market movements on a minute by minute basis, that is when you should actually start trading with options. Unless you are that good, you should try and avoid options trading. Yeah? ठीक है ओके नहीं बट आप रिवर्स वाला चीज सजेस्ट नहीं करोगे उतना मतलब No, because if I suggest, then every time your stop loss hits, you will go reverse, and then you will make loss. So it's not that I reversed because there was a small lesser or something. There are different factors. अच्छा ओके इट्स नॉट बिकॉज कि ये नहीं हुआ था, अच्छा चलो ये कर लेते हैं. मैं अगर बोलूंगा कर लेना चाहिए तो आधे लोग यही समझेंगे, अच्छा अगली बार कॉल लेना है, हिट हुआ तो पुट ले लेना है. प्रॉब्लम ये है ना, पीपल ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स. हाँ हाँ फेयर इनफ एक्चुअली ठीक है गॉट इट Anyway, so US market, if you guys see, this was the trend line when we discussed last week that we might see a reversal, and if that happens, we have to buy at the continuation. This was this line. If you see, this was the line which we said if it goes above that, you need to buy. Went above it, broke the trend line, continuation was there.
Looks a very nice, good rally. Still looks bullish. Okay, even on a weekly chart, if I open, clear-cut bullish signal is there. I don't see any kind of resistance until this point for 45.91. So still good enough, 4-5% move is still left out. So the view on US market will be bullish. Okay, continued since last time. Then Dow Jones, so very similar again. If you see again Dow Jones, डिस्कस कि इसके नीचे जाएगा सेल करना है, इस लाइन के ऊपर जाएगा बाय करना है, went up, continued again, clear cut bullishness is there, no point selling it out, clearly bullish in nature. Okay, same with Nasdaq. Okay, this was the supply zone, this was the line we discussed that if this one gets broken out, need to go long. Okay, again this remains bullish. So everything you guys see worked out exactly as discussed. No surprises. Euro 15 again, यहाँ से शुरू हुआ था लास्ट वीक में, we discussed कि जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक it will continue to go up, and it went above this line, continuing to go up, still looks bullish. Okay, right now you should not look to go long because the risk reward is not good. Okay, but the index is clearly bullish. Same with DAX, 1, 2, 3 almost done. Risk reward is not good, but index is clearly bullish. UK 100 again broke up into the upper level. This might now, इसके ऊपर अब सीधे resistance यहाँ पे आता है. So again on this also view remains clearly bullish. Should go and test this. तब देख रहे हो मार्केट, देख रहे हो कैसे टर्न लेता है. Last week में we had half of the things, bias was up, but we didn't had very clear cut signal. Few Asian indices were actually in red, right? Like Nikkei, Hang Seng and all. Okay, they were looking very clearly red कि हाँ अगर इसके नीचे जाता है will sell, but हुआ क्या? देखो Hang Seng में भी this reverse and you should have gone long here. Okay, right now looks clearly bullish. ये आपका ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक तो इसको जाना ही जाना है. सॉरी Nikkei, ठीक है. सेम चाइना में भी अगर देखो, नाउ इसके नीचे हमें सेल करना था, अगर तुमने किया होता तो ये नीचे जाता, यहाँ पे तुमने कुछ प्रॉफिट बनाया होता, अगर ट्रेल नहीं किया होता would have ended up in loss. This also looks clearly bullish, but this needs to continue. This needs to continue of last week's high for the bullishness to continue. Okay, plus risk reward is not good because ऊपर यहाँ पे आपका resistance, but since everything else is so clearly bullish, the idea should be to go long rather than short. Same with Hang Seng. Okay, this was the level we discussed कि इसके नीचे जाएगा, we should end up going short. If you would have shorted, you would have made good amount of money. But if you would have not exited, you would have lost also all the profits. Similarly, this was the level we discussed. इसके ऊपर buy करना है, so ideally you should have been long right now. Okay, this looks also clearly bullish in nature. Okay, so now all the indices are very clearly pointing towards. So last week we discussed, now it seems like the bottom is done and we should be reversing. This is something which I've been saying since last 2 weeks. Okay, that make your portfolio, start investing. आधे लोग अभी सो रहे हैं, वो जगेंगे जब ऑलरेडी निफ्टी हाई पार कर लेगी, देन दे विल कम एंड आस्क कि अब क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए क्या, तब वी विल बी एग्जिटिंग एक्चुअली. ठीक है, सो लेट पीपल कीप स्लीपिंग एंड लेट्स मेक मनी अंटिल देन. डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है? डबल टॉप, रिवर्सल. ओके, weekly chart पे again this was, you clearly see this was the resistance zone we marked, worked like a charm, reversed from there. Okay, seems like a longer term top of dollar is in place. Daily chart पे भी देखो double top पे almost. The moment it starts going below this support region जो कि है 97.3 के आसपास, you can start assuming that the long term trend in dollar is over and now
equities will continue to go up, dollar will continue to go down. So let's wait. Abhi that is not yet clear, but if dollar starts going below Thursday's Thursday's low, that is 97.7, ये अगर इसके नीचे डॉलर जाना शुरू कर देता है, and if it closes below this on daily chart, then it will be confirmed that the bottom in equities is now in place, and now we are not at all going to retest that bottom anymore, and you should start putting in the last amount of money that you would have left in equities. Yeah, and if you have not already started investing, then only my sympathies are with you in that case. Okay. So dollar clearly looks bearish in nature. For it to continue that bearishness needs to break this. Yeah. On the upper side, this is the top that it needs to break for it to continue to go higher. And doesn't seem like that is going to happen. Gold, same exactly, ditto, as discussed last week. Clearly it was bearish. ऊपर का हमने मार्क भी नहीं किया because we are dead sure कि वो गिरेगा, and it has fallen down. It has fallen actually pretty nicely. Again looks like gold का हो गया भाई. ठीक है, अब बस गिरना ही गिरना है इसको. व्यू इसमें भी नेगेटिव रहेगा. Obviously it's in line with our view on the equity markets. Crude again like we discussed, इसके नीचे जाएगा, sell करना है, would have sold off, you would have made good money. Okay, now it has taken a little bit of support from this trend line. Now the crude is very different to gold and other things. Okay, crude अभी बढ़ा था cause of why? Crude क्यों बढ़ा था? Escalations from Russia. Supply concern. Okay, supply बढ़ने की वजह, कम होने की वजह से crude के cost बढ़ गए थे. Right now if economies keep growing, the demand will also increase. So crude का इतना easy नहीं है to say. Actually, how I feel is कि हाँ, this might be a very much the long-term top in crude. Okay, I don't think it will go beyond this anytime soon. But at the same time, I don't feel like crude will fall much. Okay, it might, and by fall much I mean it won't go to like 3,000 rupees, $3,000 rupees and all that. What I feel कि crude can mostly come to somewhere around 5-6 हजार. ठीक है, उससे नीचे नहीं. So let's see क्या होता है. So crude will mostly, what my view is, it will be mostly sideways to down. Okay, it will not go up obviously, but it won't fall also massively. Okay, so view will be mostly sideways to down. Yeah. Now let's go to currency pairs. Euro USD, as discussed last time, this was the support. We said इसके नीचे गया तो sell होगा, never went. Actually reverse, sideways है, as we expected last time. Still remains sideways. Becomes bullish only above last week's high. Okay, still it is sideways. Pound USD, again something we discussed कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो should become bullish. Already closed also of this. Now it looks really bullish in nature. Okay, continue. This will, if this goes over now this last week's high, the bullishness will continue. USD INR also we discussed कि हाँ, this looks like a long term top. इसके नीचे जाए sell करने का. Blue line के already नीचे close हुआ है. So as even indicated by dollar index, bearish. This was also discussed क्योंकि इसने तोड़ा था last week. We were clearly saying this should be bearish. Again continued on the same side, still remains bearish. Okay, nothing which shows me that. अगर देखो इसमें support अगर कहीं आता हुआ दिख रहा है तो it's somewhere closer to this level. यहाँ तक तो येन को गिरना ही गिरना है. ठीक है. चलो, तो ये हो गया ग्लोबल आउटलुक. कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन है. सो
again, I think last time भी मैंने ऐसे पूछा था कि how can we just make some money out of it, ये जो currency related है. So are there any different bonds or any different instruments that we can go with? करेंसी के लिए हाँ, नहीं, just leave it. You can do forex trading, but don't do that. See, Swapnil, unless and until you become good at trading, the more things you try, you're just opening up your avenues for losing more. I understand. Yeah. Yeah. So if you want to trade currency, you want to trade crude or anything, changing instrument will not help you being a profitable trader. Changing the way you trade has to be there. So first become profitable in what you are doing. Once you have found the way to be profitable, then expand it. You always expand and replicate your winning things, not the losing things. Right now you are losing. Yep. If you just go and start doing currency, you know what is the leverage you get in currency? 15 times, 25 times. You'll end up wiping out your account in just 1 or 2 trades. Why do that? I was just thinking, since there is a clear-cut indication that this There is is a for, clear-cut indication in index also. Nifty, Bank Nifty. Did you make money yeah. there? I'm sorry if I'm being so rude, but No, I mean that's perfectly fine. That is the way how it should be. एग्जैक्टली सो वो दिखता है कि क्योंकि वो कर नहीं रहे तो अभी लग रहा है कि अरे वो तो बड़ा क्लियर है. जिस टाइम करो वो सेम ही है. निफ्टी बैंक निफ्टी वाज आल्सो दैट क्लियर ओनली. निफ्टी में क्या था? क्लियरली वी डिस्कस ना कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो वी हैव टू बाय. हाउ मेनी पीपल वुड हैव बॉट? वेरी लेस, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि पीपल कीप वेटिंग कि मैं दूंगा कॉल ऑप्शन इन फ्यूचर तभी वो करेंगे. इट्स ऑलवेज क्लियर व्हाट टू डू. एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. Just increasing the number of instrument will never make you be successful. You Yeah, have to got your first point. you just choose one stock, HDFC Bank. If you are good at making money, you'll just make money in just one stock. Forget about all 20 different things. We are seeing 20 different things to have a holistic idea, not to trade upon all of them. Yeah, Yeah. makes sense. And I literally advise people not to trade in gold, not to trade in crude, not to trade in forex or anything else. Because being very honest, you guys are still not there. But you should go ahead and trade on them. The liquidity is very high in these things. The movements are very fast. The volatility is very high. And you'll lose a lot of money very soon. You'll not even realize. Just use them right now for indications and to understand how and where the markets can be, but don't trade on them as of now. Yes, I got your point. And this is really good discussion that at least we will never, it will be, outside our thinking side. First, be profitable one place. Once you are profitable, you know, okay, okay, this is how I have to trade. Then keep replicating that in every, because same theory, same things are there in every kind of market, any instrument. But first you have to be profitable once for a good number of years or months. Then only you should go and navigate other places. Yeah. Yes, sir. Thank you. No worries. And forex market is a lot of financial institutions, big money, which is there. The volumes there in forex futures and all is wild. 1% फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, अचानक से पता चलता है कि आके बैंक ऑफ अमेरिका ने कुछ खरीद लिया, सीधे 5% भाग जाता है. और इतना ह्यूज वॉल्यूम्स होते हैं कि वो मतलब स्टॉप लॉस एंड ऑल की बैंड बच जाती है. Not something which one should trade on unless they are very good at it. Anyway, so any doubt, guys, on the markets? Not a doubt. I just wanted to make I found out something. So during this entire period where we're discussing the global markets, what I've noticed is we're basically just using basic apna price action ka thinking, right? Yeah. I mean, with the reversals and everything, it just clicked. So I just wanted to make that observation just so I know.
Yep. That's what we are doing. Yeah. We use what I was teaching you. That's why I wanted to teach that, so that everyone is on the same page and understands what is being told. अब मेरे को बार बार वो इलियट वेव नहीं करना पड़ता है, एटलीस्ट वो समझाने में हालत हो जाती है मेरे. This is easier thing to do, understand the price action part, easy to grasp, easy to understand. Yeah, definitely. And it also makes a lot more sense. Like it's easier to Right. understand. Good. Chalo. So no further doubts. Let's discuss our indices. So this is what we expected Nifty to do. Almost what Nifty actually did. Exactly what. This was the level last week साहब we discussed कि इसके ऊपर जाएगा तो buy, इसके नीचे जाएगा तो sell, नहीं तो बीच में रहेगा. It was that bullish. It broke above the high and continued going up. Yeah. So if you had a focus, you should have gone long here. 16,700, 16,800. And you would have easily made 700 points profit on Nifty with a SL of just how much? 200 पॉइंट के SL के साथ 700 पॉइंट का प्रॉफिट बनाते इजीली 1:3 ऑलमोस्ट 3.5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है. वही है. एंड दैट वाज सो इजी. सर अब जैसे हाँ इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता था. इसके ऊपर गया बाय करने का, रखने का. 1 2 3 वेव स्ट्रक्चर था, डिस्कस भी था. एनीवे सर एक क्वेश्चन है, जैसे अब अगर मंडे को बड़ा गैप अप होता है तो इट विल ऑब्वियसली गो स्ट्रेट अवे अबव लास्ट वीक हाई. So then do we wait for a retracement or how do we go about it? बट मंडे को तो गैप अप हुआ ही नहीं ना. नहीं अभी अगर होगा, मैं बोल रहा हूँ कमिंग मंडे. मतलब वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो हो गया तो आप like we just go by similar analysis that crossing last week, this week's high we should go long. So if it's a gap up, then what do we do? गैप अप गैप डाउन से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है. यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर जाएगा तो मुझे खरीदना है, राइट? मान लो कल को यहाँ ओपन हुआ, राइट? हाँ. सो जब यहाँ ओपन हुआ तो दिस बिग गैप, आई विल वेट फॉर द 5 मिनट कैंडल ना. थोड़े ना वो ओपन होते ही खरीद लूंगा. अब वो 5 मिनट कैंडल में अगर मुझे रेड दिखा तो आई विल नॉट बाय. देन आई विल एक्चुअली सेल कि हाँ ठीक है गैप फिलिंग हो गई, रेड के नीचे एक और दिखा, आई सेल इट फॉर द गैप टू बी फिल्ड. बट गैप अप हुआ इसका मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रेंथ. सो द मोमेंट द गैप इज फिल्ड देन अगेन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर रिवर्सल टू बाय. हाँ तो सर जनरली आप क्या then you wait for the gap filling before taking long position? क्या मैं वही Depends on the 5 minute candle. अगर पहला 5 minute candle भी green ही है तो I look to buy above that. अच्छा okay. Doesn't matter there is a gap, there is no gap. ठीक है. ठीक है. सो अभी भी जैसे क्लियरली निफ्टी इज क्लियरली बुलिश. जो आपका ये क्या था, थर्सडे था ना 17 मार्च को, थर्सडे हाई के ऊपर जो भी आपको अगर कंटिन्यूएशन दिखती है, you should go ahead and buy it. As simple as that. But at the same time, there is a big gap here. If you see a gap down opening, continuation on the downward side, look for the gap to be filled to 16,900, मतलब 17,000 तक, before it actually goes up. So again, you have to see the price action, how and where it is happening, and accordingly you have to take the trade. But as of now, looking on the daily chart, it's a buy above Thursday's high. Just remember that there is already a big move that has happened. High chances that you might see a downward dip, okay, to 17,000 levels before it actually continues. But as of now, on the chart, looks clearly bullish above Thursday's high. Bank Nifty, again, very similar, okay, above Thursday's high, it's a buy. But यहाँ पे आपका क्या है? Resistance है.
तो मान लो अब गैप अप होता है, यहाँ पे होता है, तो हाई चांस है कि क्योंकि रेजिस्टेंस जोन में खुल रहा है, पहले थोड़ा रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए. So look where the price is opening, closing. How many people are actually marking their charts before the market is open? Tell me. How many of you are doing that? Sir, I do that. So I do. ट्रेंड लाइन बनाते हो, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हो. हाँ सर, Yes, sir. डेली बेसिस पे डे हाई डे लो मार्क करके और जो ट्रेंड लाइन है वो. दिखाओ मुझे, शेयर करो स्क्रीन. सर मेरे लैपटॉप पे लैपटॉप शेयर करो ना भाई, करो. I'm pretty sure maybe one or two people might be doing it. I'm not saying anything, I'm not trying to pick, but I'm pretty confident कि out of 22 people, only one or two might be doing it. Rest 18 will never be doing it, and they would be wondering कि यार मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो. चीजें आसानी से चाहिए इसलिए नहीं बन रहा है, सिंपल. ये ग्रुप पे भेजना शुरू कर सकते हैं डेली बेसिस पे, मतलब एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो फिर भेज भी सकता हूँ. नहीं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा ना कि मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ. लोग खुद का काम नहीं करना चाहते, लोग वो चाहते हैं कि दूसरा इंसान करता रहे. You need to wake up at 8:30, sit in front of the system, look at the companies we want to trade in, look at the indices, mark important levels, swing highs, swing lows, trend lines. इंट्राडे करना है 5 मिनट चार्ट खोल के उसमें बनाओ, स्विंग ट्रेडिंग करना है डेली आर्ली कैंडल में बनाओ. ये सब करना पड़ेगा. जब तक वो नहीं होगा तब तक, जब तक मैं कॉल्स दे रहा हूँ तब तक बनेंगे पैसे, बट वो कभी खुद नहीं बनेंगे पैसे. फिर वो सिर्फ कॉल जब तक आ रहे तभी तक बनेंगे. I agree, sir. I've tested it for Pi Industries, and for Pi Industries, it was really working well for me. Good, Swapnil, you trade nicely. The only thing is that what I find that you're very lazy in booking your losses. I agree. Don't trade like you don't want to book loss. Book loss. Booking loss is important. But book loss at the right time. Don't delay it so much that it becomes a pain in the ass. Sir, I have been doing it. I have been marking and all, but somehow अभी उस हिसाब से बने तो नहीं है पैसे. But I've been marking. I've shared that in the Telegram group अभी. Good. करो थोड़े दिन करोगे. देखो एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, टाइम लगता है सीखने में, समझने में. मार्किंग कर रहे हो, कुछ दिनों बाद समझ में आएगा. मार्किंग चेंज भी करना होता है ड्यूरिंग डे टाइम, राइट? Yes, that's very right. ये बात बिल्कुल सही है कि मार्किंग चेंज भी करनी होती है. पुरानी वो ट्रेंड लाइंस को कई बार हम पकड़ के बैठे रहते हैं, नहीं यही चलेगी, यही रहेगी. वो जरूरी नहीं है कि हर बार रेलेवेंट रहे वो. Exactly, you have to change your markets, and then where are you marking, on which time frame? Okay, for example, you must have marked the important resistance area on a hourly candle. Okay, but on a 5-minute candle that might be breached. बिकॉज हार्ली के क्लोज होने में मान लो 45 मिनट है, हो सकता है 5 मिनट में पहले 6 कैंडल नीचे बनाए, फिर अगले 3 कैंडल में रिकवर कर ले. तो हार्ली पे तब भी वो दिखेगा कि हाँ दैट सपोर्ट हैज वर्कड, व्हाइल 5 मिनट में वो नहीं दिखेगा. सो दीज क्लैरिटीज यू शुड हैव. है ना? समझ में आया मैंने क्या बोला? सर ये ब्रीच वाली बात दोबारा प्लीज एक्सप्लेन सर. देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, यही देखो, ये डेली चार्ट है, ये कैंडल है, ये 24 जनवरी का है. ठीक है, अब ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है. अब तुम्हें डेली में तो ये दिख रहा है ना कि दिस सपोर्ट हैज वर्कड, राइट? क्लोजिंग इसके ऊपर दी है तो इट हैज वर्कड, राइट. बट वो अगर 5 मिनट चार्ट खोलोगे तो देयर वुड, यू विल सी कि इट हैज बीन ब्रीच्ड, इट वेंट डाउन. है कि नहीं? When you're trading, So 5-minute chart में you can still would have taken a shot and made money, and then you would have seen a reversal by the price action used, and you would have exited, made good money. But say if you are trading on a daily chart, a swing trader, in that case you will have to wait and you will only exit once it has closed above this.
not before that. So you have to be very clear in terms of what time frame you are using and what is your expectation within that time frame. Hourly chart पे तुम्हें support दिख रहा है और वो 5 मिनट पे break हो गया, that doesn't mean कि वो support गलत है. That just means you don't know. Unless that hourly candle close, you don't know. You cannot say that support has not worked. So in that case, जैसे अगर अर्ली कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और अर्ली कैंडल फॉर्म नहीं हुई, तो वी शुड ओनली टेक अ ट्रेड आफ्टर द अर्ली कैंडल फॉर्म, राइट? नहीं भाई, तो डिपेंड करता है ना तुम किस क्या ट्रेड कर रहे हो, टाइम फ्रेम क्या है तुम्हारा. सर अगर मैं अर्ली देख रहा हूँ तब तो मतलब तो अर्ली देख रहे हो तो obviously you will wait for the early candle. Then you don't look at the 5-minute candle. That's what I am trying to say. If you're trading in a 5-minute candle, you trade on a 5-minute candle. सर अब जैसे अर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे हुए हैं, मत करो. तो वो नहीं करें. हाँ, तुम 5 मिनट कर रहे हो मतलब कि तुम एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तुम्हें इंट्राडे ट्रेंड से मतलब है. वो क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे shouldn't matter to you. Just mark this intraday trend lines and mark swing highs and swing lows and all those things. That's it. ठीक है. Once you start looking at different time frames, you'll get confused because you'll see different supports. अगर तुम खुद सोचो ना, इसमें मैं डेली बना दो, डेली में अभी कितने मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मैं पूरे चार्ट पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही रहेगा, ट्रेड कहाँ करूंगा. ठीक है. राइट. अब देखो ये जो टॉप है, आर्ली में देखूंगा तो ये देखो डबल टॉप दिख जाएगा, ये दिख रहा है, ये रेड वाले का ग्रीन वाले का. तो यहाँ पे भी एक लाइन बनाओ, फिर यहाँ पे एक लाइन बनाओ, देखो ये भी दिख जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस. तो हर जगह जब सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो इंसान ट्रेड कहाँ करेगा. सर एक चीज, एक क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू डबल टॉप डबल बॉटम. इज इट अ डबल टॉप इफ द सेकंड हाई इज अ लोअर हाई? डजंट मैटर यार, थिंग्स आर उतना फर्क नहीं पड़ता है अप्रॉक्सीमेट. क्या? ट्रेडिंग इज अबाउट द बेस्ट गेस. इसीलिए Okay. किताबी चीजें ट्रेडिंग में नहीं चलती, क्योंकि किताबों में इतने रूल्स होते हैं कि ऐसा रहेगा तभी होगा, ऐसा रहेगा तभी होगा. नहीं सर, एक बार आपने बोला था ना कि लोअर हाई था तो आपको भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला, बट इट्स नॉट अ सैक्रोसेंट रूल, बट यू आर सेइंग कि नो, इट इज नॉट. ओके ठीक है. वो थोड़ा ऊपर रहे थोड़ा नीचे रहे, इट्स ऑलमोस्ट अ डबल टॉप. लाइक हाउ विल यू डिफाइन. अब जैसे ये और ये है, ये देखो ये टॉप है, ये टॉप है. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डबल right. टॉप. ये भी डबल टॉप है, ये और ये. सर थर्सडे को ये हुआ था 5 मिनट टाइम फ्रेम में. हाँ मतलब वो तुम इतना, if you start looking at the perfect scenario, perfect setup ना, so you'll miss a lot of chances. You'll not be able to trade. हाँ करेक्ट, राइट सर. हाँ. Anyway, so बैंक निफ्टी में guys देखो ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस है. So mostly what I'll be looking for is a failure of a gap up or gap down to sell it. Okay. Just Looks one bullish in question. nature, but mostly we'll be looking for a failure of a gap up or a gap down. Unless and until there's a continuation, I look to sell if there is a gap up or gap down. Okay. But yeah, looks bullish as of now. Yeah, someone is saying something. Yes, so what I'm asking is, suppose we are looking at a 5-minute candle for intraday trade, then how far back should we make the support and resistance? मतलब कितने periods पहले तक should we go? Like if you're looking 3-4 दिन, that's it. this candle today, यहाँ का next support resistance आपको मिलेगा, ये जो big red green candle है, वहाँ पे आपको मिलेगा maximum. See, 3-4 दिन, that's it. अभी यहाँ पे Okay, अगर मैं 3-4 5 मिनट चार्ट खोला तो मुझे बस ये देखना है, इतना काफी. अब थोड़े ना मैं ऐसे इसको छोटा करके मतलब कहाँ तक देखना है, नहीं. सिंपल इतना बस, जितना चार्ट खोला दिख रहा है, हाँ क्लियरली एक ट्रेंड है, बुलिश है, ऊपर है, ये रेजिस्टेंस हो गया, रे रेजिस्टेंस हो गया, इसको ऊपर क्या खरीदना है. मार्केट मेरे में ऑलरेडी जैसे ये लेवल्स. दैट्स इट. सर आप 3-4 दिन का ट्रेंड लाइन बना लोगे ना, जैसे हाँ आप वही 2-3 दिन 4 दिन जो भी चल रहा है रिसेंट. 5 मिनट में और क्या चाहिए यार. 5 मिनट मतलब इंट्राडे मेरे को मतलब है. राइट. सर निफ्टी में भी एक बार सर अगर निफ्टी का चार्ट खोलेंगे सर, अगर आप डेली पे देखोगे तो ये 17
नहीं, सॉरी सर, आई मेंट डेली ओनली, नॉट 5. सर डेली पे भी 17,600 इज सम काइंड ऑफ अ स्विंग लेवल ना, 17,600 सर, आप अगर ये लेवल ना, हाँ हाँ यहाँ सर, पे आपका रेजिस्टेंस है, अगर पहुंचने तो दो, बट आप, पहले ये क्रॉस हो तो खरीदेंगे ना। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, तो वो दूर है थोड़ा, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर लग रहा है कंपेयर टू हाँ बैंक. एग्जैक्टली, यहाँ पे तो अभी टाइम है, अच्छा राइट. मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में जस्ट ऊपर ही है, सर के ऊपर, हाँ ठीक जस्ट है. यहीं पे है। तो यहाँ पे चांस है ऊपर, तो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी निफ्टी से ज्यादा है, वेरी मच पॉसिबल इट ओपन्स हियर देन स्टार्ट्स गोइंग डाउन। राइट. Also 1 2 3 move हो चुका है, 1 2 3 done, so might come down. Okay, looks bullish, but and that's why I say कि commentary सुना करो, that is more important. I have marked here it green, but mostly I'm looking to sell it, not buy it. Banks. Nifty is a different story, where but would you bank, like to sell? Where would you like to sell? अगर because let's say because most probably कल gap up हो सकता है, I just I have don't an know, assumption. Gautam, where I like to sell. I don't know. I don't have a level in mind. Like I said, I look for a failure. There's a failure of the gap up, we'll sell there. Failure and continuation. So let's say, sir, it opens at 36,600 or 700, and the first 5 minute candle is the red candle, sir. Yeah, so I'll sell it Yeah. below that red candle. Right, right, sir. Price action will give the levels, right? Exactly. ठीक है, anyway, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। देखो मीडिया भी देखो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे ही है ना, ये भी देखो तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पे है, तो इसको अगर कंटिन्यू करना है, इट नीड्स टू गो अबव दिस, since it is at resistance, higher chance that it falls a bit against this lower level, मतलब sideways to down हो सकता है। Okay, looks bullish as of now, so I'm marking it bullish because it is clearly bullish, but there is a resistance, so I'm giving you guys the context key. If you see a failure, you should go ahead and short it, not get confused by this. Okay, finance is looking also very bullish in nature. Okay, clear cut bullishness है, ये आपका जो एरिया है, आ गया, ये रेजिस्टेंस में ही है, बट अगेन सिंस इट इज बुलिश, इसके ऊपर अगर जाता है, लास्ट वीक के हाई के ऊपर अगर निकलता है, you should go ahead buy it. Okay, IT is also looking bullish, like we discussed, ऊपर तो इसको जाना ही है, first it will touch this before and it comes down, so again this remains bullish. Auto Near also, the resistance, why are we saying it is bullish? price Like- action is bullish here, resistance है, but I have not seen resistance can be violated ना. It's a green candle, I look to buy, like I said कि अगर वो जब तक रेड मुझे दिखता नहीं है, I look to buy. Got it. यहाँ रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे आएगा तो you will, you know, just buy it. You have to wait for a confirmation. That has not come. Right now it is bullish. इस कैंडल में क्या गलत है? Started from here, closed here, clearly bullish in nature. हाँ, there is a resistance, so it might come down. But right now it is bullish. Same with IT. Same with Sir, autos. IT dollar में हम लोग we are expecting that will come down. IT Yeah, is still IT will come. Means dollar, we are expecting dollar to fall down, right? Then can we be still bullish नहीं in IT? नहीं, डॉलर इतना भी नहीं गिर रहा है अभी, IT ऊपर जाएगा। ऑटो में भी क्लियरली बुलिशनेस है, ठीक है, लास्ट वीक हाई के ऊपर बाय। फार्मा लाइक वी डिस्कस, इसको ऊपर टच करना ही करना है, तो ये भी अभी रहेगा बाय। वो अलग बात है, गैप अप में ही टच कर ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
ठीक है, FMCG, we discussed it will touch this trend line before coming down. Almost it is there. So again, it is at resistance, but as of now, it is still a buy. What happens tomorrow, we don't know. If there is a weakness, you sell, but as of now, it's a buy of last week's high. Metals, a very small consolidation zone. जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं निकलता, it will remain sideways. Above that, below that, above that becomes buy, below that becomes sell. Right now it is sideways. Reality clearly buy. ठीक है, so even yes. Sorry sir, go ahead. Go ahead, Nabhi, tell me. So when you look at a candle, more than the size of the candle, जैसे green candle, is it the type of green, जैसे आपने price action का first candle समझाया था, like a complete green जिसमें कुछ भी wick नहीं है, that is a more powerful buy signal क्या, rather than एक बड़ा green जहाँ पे दोनों side बड़े बड़े wicks है. हाँ भाई, बड़े बड़े विक्स होंगे तो डोजी काइंड ऑफ हो गया ना, साइडवेज काइंड ऑफ सेटअप हो गया. जितने बड़ा टेल हो गया उतना मतलब टेल का मतलब क्या हुआ, वेयर ट्रेडिंग हैपेंड बट neither side was able to Right. be strong, whether bulls or bears. So bigger tail means bigger level of confusion about the strength. That's how it is. तो जैसे यही निफ्टी रियलिटी का आप जो देख लीजिए लास्ट वीक का कैंडल, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज अ मोर बुलिश कैंडल की जो ऑटो का वीकली कैंडल, ऑटो वाला, क्योंकि वो प्योर ग्रीन था. टोटली मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन, स्टार्टेड फ्रॉम हियर, क्लोज राइट एट द टॉप. हां, सब ठीक है. गॉट इट. सर इन केस ऑफ रियलिटी यहाँ पर जो आई एम नॉट श्योर, बट इसमें रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए बैक टू द ट्रेंड लाइन एज पर प्राइस एक्शन once before a move upward. नहीं, you wait for that, and ये almost हुआ तो है ना. ये देखो, ये ट्रेंड लाइन के पास आया तो है. ये तो वीकली चार्ट देख रहे हो ना, डेली या हुआ तो है ये रिट्रेसमेंट. ठीक है, and that was a point where you should have bought it. Okay, I remember sharing DLF chart with you, sir, where you showed that कि उसमें यही typical same trend बन रहा था. Obviously DLF is one of the biggest after LNT in reality. Anyway, so we are done with the outlook on the indices and the global things. Almost everything looks bullish. Okay, just be cautious on one front, that I'm not saying go ahead and sell, but most of the things after this massive move are at their resistances. So there might be a chance of a small down move before this trend again continues. Okay, so if there is a down move, look to buy. If you don't look to sell, because you might not be able to identify and sell it that quickly. So don't look to sell. If there is a down move, again look for where you should re-enter. So make some trend lines and all, which will give you the points of re-entry and all. Yeah. तो जैसे आपने 2-3 वीक पहले बोला था एक बार कि हम लोग कुछ बाय नहीं करेंगे, तो वैसे ही इस बार एकदम उल्टा है ना कि वी आर नॉट शॉर्टिंग एट ऑल. हाँ, डोंट लुक टू सेल नाउ. 2 वीक से तो मैं बाय करने को ही बोल रहा हूँ. पिछले वीक नहीं तो 3 वीक पहले आपने एकदम राइट बोला था, जब मार्केट बहुत पिटा था, कि बाय नहीं करना है. दैट वाज माय फर्स्ट वेबिनार, आई रिमेंबर. अब बाय करना है बस. पिछले वीक से तो पिछले वीक से 2 ही वीक से देखो फिर बढ़ भी रहा है. क्यों बाय करने को 2 वीक से बोल रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग सपोर्ट पे थे, एंड दैट वाज आवर टारगेट वाज ऑलरेडी डन. ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक टू बाय. इफ देयर इज अ फॉल, अगेन लुक टू बाय, जस्ट ऐड ऑन टू योर पोजीशंस. ठीक है, नाउ वी टेक 15 मिनट ब्रेक. 4:15 पे मिलते हैं. एनी डाउट गाइस? पैसे बनाओ यार, हर महीने मेरे को अच्छा लगेगा कि सब लोग बोले हाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख प्रॉफिट है. करो कुछ. इट्स इजी टू मेक मनी, नॉट डिफिकल्ट. देयर आर पीपल हु आर मेकिंग 1 लाख 2 लाख, बट वही 2 ही 3 लोग हैं जो बना रहे हैं. बाकी जनता 25-30 हजार में लगी हुई है. और कुछ लोग हैं जो 1 लाख बनाते हैं और फिर 1 लाख डुबा भी देते हैं. वो और खराब लगता है.
Anyway, so let's meet guys at 4:15. Okay, we'll discuss the stocks. Focus on the discussion. Try to take some trades. Don't depend only on the WhatsApp messages. Chalo, see you guys in 15 minutes.
Hello everyone. Everyone is back. Yes. सर यार मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है बैंगलोर में अभी. Yeah, how many of you are from Bangalore? Anyone from Bangalore? नॉट मी सर. You guys have ever visited Bangalore? Sir, I'm from Bangalore, but currently, due to this work from home thing, I'm in Kolkata. तुम बैंगलोर के कोलकाता में काम कर रहे हो? मतलब पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनके पास हूँ अभी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. But you are originally from Bangalore, Srinath. Yeah. मतलब सही में स्वर्ग छोड़ के नर्क में जाके बैठे हो. Yes, sir, I feel that, but पेरेंट्स के साथ भी रहना पड़ता है. So, Don't mind guys, but I really feel Kolkata is the skittiest city in India. So I fucking won't crammed mind, up. sir. Yes. I'll stand up. I'll stand with you. बैंगलोर जहाँ पे जितना ही पापा प्रेटी है, रहता है. कोलकाता एकदम अपोजिट है उसका. सर मैं और प्रतीक कैलकाटा से हैं. हाँ, मैं और प्रतीक दोनों हम लोग कैलकाटा से ही हैं. अरे यार मैं कलकत्ता जाता हूँ ना, मेरे को लगता है कब निकलूं यहाँ से. So crowded. I don't like the weather at all there. गर्मी हमेशा, भीड़. मेरे को लगता है कलकत्ता में एक जगह मुझे आज तक नहीं दिखी जहाँ पे इंसान जगह बोल ये तो खाली है. Like you know, it's always crowded everywhere. You're originally मतलब from Jharkhand, right, sir? क्या? You're originally from Jharkhand, right? ओरिजिनली नहीं, ओरिजिनली तो मैं वहां से हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन रहा नहीं हूँ यूपी में भी, क्योंकि स्कूलिंग एंड एवरीथिंग दिल्ली में. लेकिन झारखंड में मैं रहा हूँ कॉलेज के टाइम में, धनबाद. तो तभी कोलकाता जाता था, क्योंकि धनबाद में हॉलीवुड मूवीज डब करके लगती थी. सो वी यूज्ड टू गो टू कोलकाता टू वॉच मूवीज इन इंग्लिश. कि इंग्लिश मूवी इंग्लिश में देखनी है तो कोलकाता जाओ. धनबाद से कोलकाता. हाँ, धनबाद to Kolkata was like 6 hours, something like that, 4.5 6 हाँ hours. वही. Without ticket ही जाते थे अपन. Anyway, college was different there. So at least, so for me, I work around 2 months, 1 month or 2 months from Bangalore. Otherwise, I'm in Pune. Pune is also good weather here. पुणे भी अच्छा वेदर रहता है. बैंगलोर तो अलग लेवल है. 2 दिन से गर्मी हो रही थी, तो आज बारिश हो गई है, and that is how it is. यहाँ पे if you start feeling heat, it will rain. That good. And how's Bangalore traffic, sir? That is the only thing I don't like to talk about. That is why I mentioned. बैंगलोर ट्रैफिक तो भाई यार, बट मेरे को लगता है 3-4 साल में सही हो जाएगा यार. मेट्रो एंड ऑल काफी स्टार्ट हो गई है, तो कम हो जाना, सही हो जाना चाहिए. एक्चुअली बैंगलोर थोड़ा अनप्लान तरीके से बहुत जल्दी ग्रो हो गया. दैट्स व्हाई ट्रैफिक. एनीवे सर अच्छा सॉरी ये कोई. गो अहेड. क्या व्हाट यू आस्किंग समथिंग? हाँ सर एक बार आप अगर सर मुझे थोड़ा सा मतलब आई एम स्ट्रगलिंग विद द माइंडसेट पार्ट ऑफ द ट्रेड. तो जैसे सर एक बार अगर बैंक निफ्टी आप खोलो जो अपने थर्सडे को भी मेड गुड मनी, तो आप मेरे को अगर अपना खाली एक बार थॉट प्रोसेस समझाएंगे ना कि हाउ यू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक दैट इज समथिंग आई थिंक व्हिच विल हेल्प ऑल ऑफ अस. लाइक आपने 942 पे पुट लेने को बोला, तो सर आपको उस समय कैंडल पे क्या दिखा था 5 मिनट पर, अगर आप थर्सडे का बैंक निफ्टी खोलोगे? आपने एग्जिट भी तुरंत कराया एंड देन रिवर्स कराया, तो जस्ट रन अस थ्रू विद योर थॉट प्रोसेस फॉर दोस 5 odd minutes. थर्सडे 14 कब था? यही थर्सडे को सर 9:42 को आपने टेलीग्राम पे डाला कि बाय पुट 17 मार्च ना? हाँ लास्ट डे 17 मार्च करेक्ट. क्योंकि सर वो उस समय रेड कैंडल कैसे बना, क्या हुआ? हाँ ये वाला 9:42. I asked you guys to buy here, right? यहाँ पे मैंने बाई करने को बोला था इस कैंडल के ऊपर. सर आपने पहले सेल बोला दिया था, है ना? हाँ. पहले सेल इसलिए दिया था ना, आई थॉट दैट ये 1 2 3 वेव मूव होगा. तो जब ये रेड कैंडल बनी,
So I gave a sell. I did not wait for actually कि ये नीचे आए. I just thought कि हाँ बनेगा. सर आपने रेड बनने के पहले ही दिया बिकॉज हाँ. आपको 1 2 3 लगा क्या? Exactly. ठीक ओके, है. ठीक फिर है. उसके बाद देयर वाज नो कंटिन्यूएशन. रेड के बाद कोई कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, राइट? देन है. इट सीम लाइक कि ये पूरा 3 वे मूव जो हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया. एक कैंडल में ही वो कंप्लीट हो गया उतना पूरा मूव. सो दैट्स व्हाई वी गिव अ कॉल ऑप्शन. फिर आपने 955 को बोला सर, तो 955 तो ऊपर चला गया ना 955 को, ये वाले कैंडल के ऊपर. ये रेड नहीं था. सर, ये कैंडल, हाँ ठीक है. उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं हुआ. मतलब आई एम लुकिंग टू बाय. आई बॉट हाँ तो आपने ऑन दिस कैंडल. ये कैंडल के ऊपर तो ये गया. ओ हाँ ठीक है. तो फिर ये वाला ग्रीन आपका सिग्नल कैंडल हो गया. हाँ. और फिर आप ट्रेल करने लग गए. यस. क्योंकि तो सर एक्सपायरी था इसलिए इतने मूव में हमें ज्यादा पैसे मिल गए. से अगर एक्सपायरी नहीं होता, मंडे को सेम ट्रेड लेते तो इतने पॉइंट नहीं मिलते हमें. हाँ राइट. क्योंकि एक्सपायरी था इसलिए वी गॉट दैट. अच्छा सर मंडे को क्यों नहीं मिलते इसमें? टाइम है ना, तो उतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता ना. ऑलरेडी अब जैसे मान लो एक्सपायरी वाले दिन क्या है, टाइम कम है. ऑलरेडी तुम्हारा प्रीमियम कम है, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, राइट? तो इजीली वो बढ़ जाता है 100 पॉइंट. जैसे जितना तुम्हारा बैंक निफ्टी बढ़ा एट द मनी भी उतना ही ऑलमोस्ट बढ़ जाता है. 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा तो वही बढ़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि टाइम कम है. एक्सपायरी वाले दिन बढ़ गया. और मंडे को क्या होगा, वो ऑलरेडी 150-200 का है, विच है इट इज ऑलरेडी टेकिंग इनटू अकाउंट दैट कितना मूव होगा ऊपर या नीचे, राइट? सो इसलिए वो इक्वल नहीं बढ़ता है. इट्स नॉट 1 पॉइंट पर 1 पॉइंट. 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा तो फिर 20 पॉइंट बढ़ेगा, मे बी 25 पॉइंट बढ़ेगा. करेक्ट सर. आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, तो आपका स्टॉप लॉस वाज द लो ऑफ द सिग्नल ग्रीन कैंडल की द लो ऑफ द रेड कैंडल? सेम है यार, ऑलमोस्ट सेम है, जो भी मान लो. ठीक है. Anyway. Ashutosh, actually, I had two questions. पहले तो the first one is like really stupid, but I heard about it, so I thought I would ask. I heard that people who hedge their equity investments. Is that a thing that people do? I don't hedge their equity investments. I mean, there's no need to, right? Why would I? अगर मेरे को equity investment में hedge करने की जरूरत क्या है? तो long term ना. How will I hedge it? Yeah, exactly. Not I mean, that's just what I heard. And the other thing is buy some other stock which you are very convinced. But अगर वैसा हो, एक गिरने वाला एक बढ़ने वाला हो, तो दूसरा फिर खरीदेंगे ही क्यों? Exactly. Yeah. And the other thing is in actually while trading, when you're using price action, is there like a proper way to trail your stop losses? Because what happens is I've been paper trading, and most of the times my stop loss gets hit, and so I exit in a really small profit. So we discussed ना in the price action को, जब तक कैंडल अपनी डायरेक्शन में अच्छे बन रहे हैं तब तक रखे रहो. No need to trail also. The moment you see a bad candle, trail it to prior low and something like that. Got it. Okay. Yeah. Sir, let us say we have taken a trade basis on early यहाँ पे candle. तुमने ट्रेड लिया. You don't need to trail until here. This is also green good. This is also green good. This is also green almost good. ये पहला रेड बना, then you hedge it. Trail it, sorry. जैसे ये बना फिर यहाँ ट्रेल कर लो. क्या आप लग रहा है गिरेगा? Okay. सर इसमें आपने बोला था पुट हम लोग ने जब लिया था कि आई एम वेट फॉर क्लोजिंग, बिकॉज आपको लास्ट तक को होप रहा होगा कि इट कैन टर्न, राइट? हाँ, मतलब आई थॉट कि हो सकता है फिर नीचे आ जाए. एक बार नीचे आ जाता तो फिर यहाँ तक जाता. इनफैक्ट यहाँ तक जा सकता था. ओह अच्छा, ओके. बट वो हुआ नहीं तो तुरंत रिवर्स किया. 4 बार एंट्री लिया था मैंने कि पूरा नीचे आएगा सोच के. हर रेड कैंडल पे ट्रेल करके निकलना पड़ा है सब में. Anyway. Sir, how about early candle का stop loss trailing, sir? Let us say we have taken an early candle, but the movement sometimes is so big कि आप wait ही नहीं कर सकते. Early candles don't do. Maybe you don't have capital that much कि you will trade on an early candle. Don't trade on that. I'm talking about a swing trade, sir, not on an index trade. Let us say a stock trade, sir. Oh, but that's what I'm saying. You don't have that much capital. Swing trade में भी early में काफी चीजें change हो जाती हैं.
Don't have the इसका ही मैं अगर तुम्हें hourly candle दिखाऊं, you see this hourly candle, you will lose a lot of money. You would have say you would have bought it here. Wait for it. It is already now this is at support. You will exit at almost जहाँ से market actually ऊपर जा सकता है. Don't trade on hourly candles. सर वो टीवीएस में अप्रोच ट्राई किया था, 5 मिनट में एंट्री ली, जब मूव मिल गए 15 मिनट देखने लग गए और फिर आर्ली में तो मत देखो ना 15 मिनट एक देखो बस, कोई भी एक चार्ट देखो. But then you would have to sit in front of the screen the whole time, sir. हाँ, सो पैसे बनाने के लिए मेहनत लगती है. सर आपने लास्ट टाइम एक बार बोला था ना कि जैसे you always start with an intraday trade and then it eventually has the possibility of becoming a swing trade. Yeah, but I do it because I can do it. Abhi, for you, start simple. Start with a 5 minutes, stick to 5 minutes for the day. See your hourly candle at the end of the day. Okay. If you want to carry it or not during the day. If Okay. every minute you keep changing to hourly, क्या फायदा हुआ? No. नहीं सर, जैसे हमने 580 की बाय करके 620 की कॉल सेल मारी थी, तो अब जैसे मेरे को 15 पॉइंट का मूव मिल गया, हाँ तो एग्जिट करो ना. 20 पॉइंट तुम्हारा, 40 पॉइंट तुम्हारा टारगेट है, 15-16 पॉइंट तुम्हारा मिल गया, ट्रेल करके रखो. तुम्हारा ऑलरेडी 50% टारगेट हो चुका है, तो ट्रेल करके रखो. उसके बाद सर मैं वही बोल रहा था, ट्रेल हम फिर 5 मिनट की बेस पे करें ना, जैसे 5 मिनट का हमने, ठीक है 5 मिनट की बेसिस पे करो. ट्रेलिंग एंड ऑल 5 मिनट में बेटर रहता है. ठीक है. Anyway, चलो let's start with the तो एंट्री में गाइस देखो ऑलमोस्ट डबल टॉप से रिवर्सल है. इफ इट गोज बिलो दिस इट्स अ सेल. ओके, but at the same time this is a good upward move. Okay, it might just take a support over here and then continue to go up, so you'll have to see. If it goes below this, sell it without thinking. Okay, but if it reverses, then wait for continuation to get into it. So right now for me this will be a sell below last Thursday का low. सेम विप्रो थर्सडे लो के नीचे सेल. सब में वही है, जो एक चीज करती है सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. HCL टेक में भी सेल होगा, बट HCL टेक में अगर सेल करोगे तो टारगेट तुम्हारा 1174 ही रहेगा. ओके, बिकॉज दिस होल इज अ साइडवेज मूवमेंट. टॉप ये है, बॉटम ये है. लीव इट, नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड. LTTS क्लियर कट सेल है. ओके, सेल बिलो थर्सडेज लो. माइंट्री भी सेल है बिलो थर्सडे लो. टेक महिंद्रा, लीव इट. LTI is also a sell, but LTI में देखो 1 2 3 हो चुका है. वेरी पॉसिबल कि ये ऊपर निकल जाए यहाँ से. ओके, सो लीव इट, नॉट वेरी गुड setup should also be good to take a trade. Oracle भी छोड़ दो. TCS is a good sell below Thursday's low. Sir, TCS में if we draw a trend line on a daily candle, सर उसके से बनता नहीं सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे? बनेगा, सपोर्ट पे ही है ना, तो उसके नीचे जाएगा तो टूट जाएगा ना वो सपोर्ट. देखो इसके नीचे जाए सेल करो. डबल टॉप भी तो है यार, रेजिस्टेंस से ये चेंज हुआ है डायरेक्शन. एम्फेसिस is also a sell guys below Thursday's low. Better sell below this, but ठीक है, you can take that much risk. Coforge छोड़ दो इसको अभी.
नौकरी में ये भी छोड़ दो। तो Sir, आईटी में मोस्टली थोड़ा सेल कॉल्स हैं। irony थोड़ा लग रहा है क्योंकि we were very bullish on index actually CNX IT, but we are getting most of them as sell calls. ठीक है, doesn't matter, दिख तो रहा है अब सेल, तो सेल ही बोलेंगे ना, अब क्या कर सकते हैं। So अब हो entire सकता है देखो, लेकिन सारे सेल क्या है कि इसके नीचे जाएंगे तब हो सकता है जा ही नहीं, राइट? Yeah, true. Sideways रह के फिर upward continue. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई ये सेड ना इन्फी में कि देखो जाना इसके नीचे चाहिए, सेल है, बट वेरी मच पॉसिबल कि क्योंकि दोनों देखो काइंड ऑफ डबल बॉटम है, इट स्टार्ट्स गोइंग अप, सो इन दैट केस गो लॉन्ग। फिर Okay. go long above Thursday high. No, you see the 5-minute candle and you see a continuation on upside, buy that. same with LTTS also, because LTTS is clear. LTTS will fall यार, LTTS मेरे को क्लियरली सेल लग रहा है, लग नहीं रहा है मुझे किसी भी एंगल से LTTS ऊपर जाने वाला है, इट शुड फॉल मिनिमम यहाँ तक एक बार कोफोर्थ का प्लीज वीकली कैंडल देखना, उस हिसाब से इट्स नॉट एग्जैक्टली बुलिश बट अपसाइड शायद आ सकता है वीकली। नहीं यार, कोफोर्थ अभी डबल बॉटम इन प्लेस है उसका, ठीक है। हाँ, एंड गैप फिलिंग भी शायद हो सकता है, अगर गैप के ऊपर खुले तो खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी इसके जस्ट ऊपर खुलेगा तो मैक्स से गैप तक जा सकता है, ओके। गैप के अगर ऊपर खुलते हैं दैट केस यू कीप दिस, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के कैन बाय, बट छोड़ दो अभी कोफोर्थ आइटम, ठीक है। अडानी इज अ बाय, ऊपर अब देखो लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस है, बट डजंट मैटर, अडानी इज अ बाय अबव थर्सडेज हाई। ये सब देखो सेल है, इंडाल्को इज अ सेल एंड ऑल, डाउनवर्ड मूव यहाँ पे एक्चुअली यू शुड गो अहेड एंड सेल इट, बट आई एम नॉट गिविंग these calls because these are tricky things. You are not right, you will end up losing, so let's leave it. Tata Steel will be a buy above Thursday's high. Tata Steel में अच्छा सेल कॉल था वैसे लास्ट टाइम, good money was made. JSW Steel is also a buy above Thursday's high. APL Apollo is finally giving reversal from 2 weeks. We are long. One should have exited it already. सर JSW स्टील का एक बार फिर से देख लेंगे तो It's a buy above Thursday's high. सर इसमें एक पैरेलल चैनल जैसे बन रहा है, तो उस पैरेलल चैनल के अंदर ही अगर रहता है ये ब्रेकआउट दिया ना इसने इस लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, नॉट अ वेरी कन्विंसिंग वन, बट up move sideways finally looks like a genuine breakout. If continues above this, you should buy it. APL Apollo. Coal India. National Aluminium will be a sell, guys, below Thursday's low 112 के नीचे जाए सेल करने। ऑटोज में क्या है, मारुति बाय है, मारुति about Thursday's high. Bharat Forge will be a sell below Thursday's low. एक चीज पूछनी थी,
So in autos, we are saying that, okay, it is looking, so for example, Maruti, we are looking good to buy. Overall, if you see that, it's a March end and a lot of spare parts related issues are, we can see. Forget none that. Okay, looking at chart, it looks that's a Yeah, good buy. just look at chart. Everything is there in the price. The price that you are seeing is culmination of all the news and everything. We are not trying to invest here, right? It doesn't matter. All other things. Okay, just look at the chart, make a decision. Maybe Maruti's already had a 1, 2, 3. Doesn't look like so. Still can continue. TVS is a sell. Target done. Now it looks like a sell below. Trust is low. Balkrishna looking like a buy. Last week अच्छे वैसे लिए थे. इसने last week भी अच्छे दिए थे. M&M ने भी अच्छे दिए थे. M&M is also a buy. Above last week, last Thursday's high. But just one thing, guys, M&M and Balkrishna both might give a breakout and reverse also. Okay, they look like they've already completed their 3 legs. Maruti hasn't. Hero is also a buy. Bajaj Auto में भी अच्छे पैसे बने थे. Still a buy. Then one more thing. So far in Bajaj Auto also we can expect some reversal, right? No, it's already closed above this. So not expecting a reversal. I'm actually expecting a continuation. सर ऊपर इसमें डिमांड सॉरी सप्लाई जोन नहीं बन रहा. रेजिस्टेंस है बट शुड गो अप. अशोक कुछ तो एक्सपीरियंस भी होता है ना यार. हर चीज वो मोस्टली इंट्यूटिवली आई फील दैट इट शुड गो अप. लाइक it should go. It's a very strong up move. देखो ऐसे अगर ऊपर गया होता ना बजाज ऑटो अभी तो मैं सोचता कि हाँ गिरेगा. बट इतनी जल्दी ऊपर गया. देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मोमेंटम सो इट शुड कंटिन्यू. अशोक इज अ सेल बिलो Thursday's low. But aren't consolidating up moves better than one way up move? मतलब वो क्या बेटर होता है मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है. जिसमें पैसा बने यार वो बेटर होता है. नहीं बट ऐसे इट्स वो वर्टिकल रैलीज अच्छे होते हैं. मतलब इट्स फाइन. तो बुराई क्यों है? व्हाट इज द बुराई? नो आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे नहीं पता. लाइक आप कह रहे हो तो ठीक है. तो मुझे भी मतलब कुछ उसमें लाइक हाँ आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट व्हाट गोज अप फास्ट कम्स डाउन फास्ट. बट ठीक है गोज अप फास्ट आल्सो ना. हाँ राइट. जल्दी से जल्दी पैसे बन जाते हैं. रिटर्न ऑन कैपिटल इज बेटर. So why is it bad? Right. It's just that if you don't exit them, you might lose a lot of money, or in fact all the money that you would have made. Right. Recently, you posted on Instagram that which sector is going to be trending in the coming days. So, which sector can we expect? Can't hear you, Srinath. Sorry. Recently, you posted on Instagram that which sector is going to be trending in coming days. So, which sector can we expect to be trending? That was a question for you, man. I know. Oh. You guys have to tell. Okay. Find out, give me a reason. और आप आजकल RSI डाइवर्जेंस नहीं देखते हो? It's not relevant right now. क्या? पढ़ा दिए ना प्राइस एक्शन इसलिए अब दिखता नहीं हो.
पहले भी मैं खुद नहीं देखता, तो आप लोग के लिए देखता पड़ता था मुझे because it used to help in explaining things. I anyways didn't used to use that. Okay. SBI gave a very good money this week. Still above here SBI, above last Thursday's high. सर वंस अगेन एसबीआई में भी वही एक टेम्पररी ऊपर सप्लाई जोन बन रहा है ना, राइट? But should continue. Very quick up move, it is vertical. Yeah. So if it goes above this, it will continue. अगर गिरना होगा तो फिर वो जाएगा ही नहीं. अब देखो जैसे ICICI में I will not buy. Because of the red candles in the up move? Long Not red this candle. red candle, even this candle, the green one is not a strong one. It's a kind of doji. means ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर है, जो दिख रहा है हमें कि सेलिंग प्रेशर है. SBI में ऐसा कुछ नहीं है. Still close almost near the top. So all these Axis, ICICI, HDFC Bank which have left, all these actually look like they will fall. जैसे Kotak is looking good. Okay, but then Kotak almost looks like 3 move is done, and then you have a trend line over here, so leave this one again. Sir, shouldn't Bank of Baroda be a sell? होना चाहिए, but मतलब not feeling like giving a sell as of now on Bank of Baroda, just because we'll be anyway selling Bank Nifty. But it is a sell for those who want to sell. It is a sell. Even in this is also a sell, but not giving it. Banks may usually give less calls mainly because we trade Bank Nifty, so I don't give. Bandhan Bank देखो last week हमारा buy call था, given a very handsome return. Still it's a buy above last Thursday's high. Yesterday I was marking all these things like which could be a buy and sell. So banks में मुझे सबसे अच्छा AU Bank लगा, could be a sell. Which one? AU Bank सबसे best लगा कि सबसे best sell call रहेगा. Okay. Among banks, let's see what will be your opinion. AU Bank is a sell, double top there. So clearly sell. Can sell it. Seem like the Bank of Baroda, right? Yeah. Like I said, no, Bank of Baroda is a sell, and this is also a sell. You guys can sell that. AU में यहाँ पे resistance भी है ना, double top base, very good sell. Closing also below. So many things are there which is telling us to go ahead and sell it. Divi's last week भी buy था, इस week भी buy रहेगा. Divi's is a buy. Apollo Hospital, अब देखो ये similar to अभी जैसे हमने देखा AU Bank similar है, sell कर सकते हो, but there is a trend line here, so I'll avoid it. Cipla is also a sell. But after such a big movement, I should look to buy, not to sell, so leave it. I look for an opportunity to enter long, not a short. फार्मा के चार्ट ना फार्मा जैसे ही होते हैं अतरंगी. छोड़ दो इसको, जो चीज समझ में ना आए छोड़ देनी चाहिए. डॉक्टर रेड्डी इज ए बाय above Thursday's high.
Lupin is a buy above Thursday's high. Sun Pharma is a buy above Thursday's high. Biocon, can we say like Biocon Biocon में last double week bottom sell आ किया सकता था है? but अभी sell करने लायक नहीं है वापस. Last week we sold it. It was easy sell. Now it is. बायोकॉन ने भी अच्छा पैसा दिया था, मस्त पैसा दिया था. Biocon में लॉन्ग अभी नहीं sell लग रहा है करना है. आपको, डबल बॉटम लग रहा है? अभी leave it. Biocon. ITC was also a buy last week. सर आईटीसी का अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो इज इट गिविंग लॉन्ग टर्म ब्रेकअप? ITC monthly. मंथली में तो कुछ नहीं कर रहा है यार, साइडवेज है. ऐसे तो फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट था, कुछ नहीं है, साइडवेज है. All will be a buy, guys. Tata Consumer will be a buy about Thursday's high. ना आराम हो सर ये गया मुझे. सबका बाय का फंडा वही है ना, बाय अबव. हाँ. मतलब बाय अबव डेज हाई विद 5 मिनट कैंडल एंड ट्रेल, राइट? मतलब प्रोसेस सेम है. सर एक चीज पूछनी थी, जैसे बाय अबव डे हाई एंड हम डेली चार्ट के हिसाब से 5 मिनट कैंडल पे एंट्री लेते हैं और उसके बाद हम उसको ट्रेल करते रहते हैं, तो 5 मिनट कैंडल्स में इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आफ्टर द फर्स्ट आवर और द सेकंड आवर एंड लेट अस से उस टाइम पर हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा से उस जोन में आ जाता है जिसपे हमने एंट्री ली थी. सो शुड वी लुक टू टेक अ री एंट्री? Look at that, no time. How you लेट are. अस से सर वो उसी हिसाब से अगली या नेक्स्ट डे, लेट अस से नेक्स्ट डे इट क्लोजेस अगेन, उस दिन के लिए वो करेक्ट होकर रिट्रेसमेंट हो जाता है और नेक्स्ट डे ऑन अ ट्यूसडे और ऑन अ वेडनेसडे आल्सो or maybe by sometimes even by Thursday, Friday, But it you'll comes have into 2, that 3 zone more also. daily candles. Now see them how they have formed. Accordingly, you have to take trade. Correct. Right now, you are taking trade based on what is there right now. सर बिकॉज मंडे मॉर्निंग का यूजुअली क्या होता है, जो हम ट्रेड्स कई बार वेबिनार में लेते हैं, मंडे मॉर्निंग देयर इज अ ह्यूज वो कमोशन, सर ये भी आ रहा है, वो एंट्री बन रहा है, उसका एंट्री नहीं बन रहा है एंड समटाइम्स बट हम कुछ ट्रेंड को राइड करके कुछ तो पैसे मंडे मॉर्निंग में वही बन जाते हैं, पहले 30 मिनट्स 41 आवर में, एंड फिर ट्यूसडे को जब हम देखते हैं, वेंसडे को देखते हैं, उस टाइम पर एकदम खाली लगता है. सो वहाँ अगर आपकी कुछ गाइडेंस मिल सके इन टर्म ऑफ कॉल वगैरह, so that will be really helpful. बताओ कोई example, I'll tell you where you have faced this issue. Tell me, I'll tell you. Like sir, I think last week ये हुआ था, maybe शायद I can't recall sir, maybe शायद हमारा राजा के केस में हुआ था सर. हमारा उसका राजा स्विंग था ऐसा सर, उसकी मूव्स रही थी सर. जैसे लास्ट वीक बाय अबव 582 के आसपास के ना था हमारे पास. मैं यहाँ पे बाय करना था. राइट. मंडे को 14 मार्च का ना. हाँ जी हाँ जी. So I would have given to buy above this
ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुमने बाई किया होता, मटेरियल एसएल हिट हो गया होता, निकल गए होते. Again it formed this candle. This is still a sideways candle. Right. So now you should have bought above this. ये अब रेंज बड़ा हो गया है, इस रेंज के ऊपर से थर्सडे को गया, थर्सडे को तुम आई गेस थर्सडे को तो ये ऊपर ही गैप अप हुआ था, एंड देन यू नो वो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो अगेन यू वुड हैव मेड मनी बट यू शुड हैव एग्जिटेड. व्हाट वाज द इशू? इशू सर मंडे मॉर्निंग के ट्रेड्स का ही होता है. थर्सडे को जब या नेक्स्ट 2 डेज मंडे में को जब तो क्लियर है ना, देखो ये आपका मंडे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग, ये 14 तारीख, राइट? तो 14 को तो कोई ट्रेड आया ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेड इन द सेम. ट्रेड केम ऑन ट्यूसडे. Okay, Tuesday would have gone long here above this line. You should have exited it also before it came down, right? And then next time you got the trade was here, 17th March. Again, you should have made money and exited on a trailing SL. What is the doubt? I'm actually personally not being able to recall the trade. Sorry. अरे जब मिले तो पूछ लेना, कोई नहीं. I'll try to find it. Right. सर आप जैसे हम when you sit with us for the webinar, आप अपना अलग से भी तो कुछ एनालिसिस करते होगे, तो just purely from your own gut feel point of view, आपको कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं in the mid term, since आप बोल रहे हो कि we are now in for a good bull run. आपने लास्ट टाइम सेक्टर्स तो वैसे बोला था, मेटल्स, ऑटो एंड बैंक्स, बट पर्टिकुलर स्टॉक सर जिसपे आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो लेकर के छोड़ रहे हो? पोर्टफोलियो तो मैंने आप लोगों को दिया है ना, सिमिलर ही है मेरा. दो तीन अच्छा, चीजें okay, अलग so you are होंगी not और adding. क्या, दो तीन चीजें अलग होंगी एट मैक्स, बाकी ऑल रिमेन सेम. अरे आजू एंजल वन ने तो अच्छा बना दिया पैसा. हाँ, एंजल वन तो एक ही दिन में पे दिया, ऑलमोस्ट 46% उसमें नेट प्रॉफिट है ना. हाँ, वो भी फ्राइडे को कोई सी फंड ने अच्छा पैसा लगाया उसमें. सर आप अगर इन्फी का ट्रेड देखेंगे लास्ट वीक, तो उसमें एक आपको मिलेगा शायद ऐसा ट्रेड, जब क्योंकि इन्फी का बाय ट्रिगर हुआ था, तो अपने ग्रुप में भी एक बार डाला था. देख लेते हैं यार, इन्फी देख लेते हैं. हाँ, इन्फी में यहाँ बाई हुआ था 14 को, right? You could have bought it as a swing trade also. You could have kept it for the next day, ठीक है? But next day 15 मार्च. चलो हमारा डाउट सॉल्व कर देते हैं भाई. ठीक है, so if you would have bought it, you should have kept it because the daily candle was good. Okay? Right. Now 16 मार्च को जब तुम्हारा मार्केट खुला, it opened with a red, you could have kept it. ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन बन रहा है, right, ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन बन रहा है. The moment it went below this, you should have exited. Right, so you would have bought somewhere here, almost first candle पे ही खरीदने का आया था ट्रेड आपको. 1837, 1840 पे you would have exited. Let's say at the closing, so 1870 was good 35-40 point. अभी गया, नीचे गया, यहाँ आया, सपोर्ट लिया, ठीक है. Again you could have bought here. Yeah, you could have. So this is a re-entry, sir. This is a re-entry again. वो जो हमने levels लिए थे वेबिनार में, वेबिनार levels ही आ गई है फिर से. That is what my doubt is. See, it's not about webinar level. You forget looking at it like a webinar level. It's a support, right? This is a support area. यहाँ पे gap, ये जो थोड़ा सा gap था, ये fill हुआ, ये support पे आया. Right. Support पे आके इसने reversal दिया, right? And even if not this, you should have entered on this. And then you could have exited again over here. ये red candle बनी, उसके नीचे continuation हुआ, exit करो. उसके पहले देखो रेड बना, कंटिन्यूएशन नहीं, रेड बना, कंटिन्यूएशन नहीं, रेड बना, उसके ऊपर ही रह गया. So this is where you will exit it first time. You after entering. So again you would have made easily 1835 से 1870, similar 35 पॉइंट फिर आ गए. ठीक है, फिर नीचे आया तुम्हारा, यहाँ पे 1 2 3 हो गया तुम्हारा खत्म.
यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कई जगह मल्टीपल एंट्रीज हैं here सर अब and यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्चुअली दिस इज व्हाट द माइंडसेट वी आर ट्राइंग टू लर्न, दैट वंस एक ट्रेड हमारे को कुछ भी तरीके का ट्रांजैक्शन दे देता है, वेदर इट इज पी और एल, प्रॉफिट या लॉस, हम उसके बाद उसको दोबारा एंट्री करने के टाइम पर बहुत डाउट में आ जाते हैं। जैसे आपने अभी ये बताया कि इन्फी के दोबारा हम एंट्री ले सकते थे, सेकेंड एंट्री व्हेन इट बॉटम्ड आउट एंड फिल्ड द गैप, वहां से एंट्री लेना हम भूल जाते हैं। फर्स्ट करना एंट्री सब पड़ेगा ले लेते हैं। उसके लिए तो यस ये सर। तो बताया ही था। आप देखो, हमने टाटा का मोटर का, टाटा स्टील का जो ट्रेड डिस्कस किया था प्राइस में, कितनी 3-4 एंट्रीज थी, सेम थिंग। सो व्हाई टेक ट्रेड्स? Just a question on a 5 minute, suppose we are going long and after that we see a red candle. After that we see the next candle close hone pe, do we decide ki we need to exit or should we exit even before it closes? Like how should we trail or exit? depends totally on your risk appetite. I usually, if I have huge lot size, I exit at the moment the red candle is gone. But see, again, it depends on the trend now. If the trend is very strong upside, a red candle doesn't mean I'll exit. I'll draw a trend line, I'll see, I'll wait for the trend line to break then. Okay, because it might just come down, test the trend line again, continue to go up. So it will actually give me an opportunity to re-enter, something like that, instead of exiting. Right. And so one more thing, right now you made a trend line, but you did not make it from the big green opening candle. You made it after the next swing low. So is that the way we should do it, or should we take it from the opening candle? Trend line किस लिए होता है? Trend देखने के लिए होता है ना, right? तो तुम्हें जितना recent trend देखना है वहां से trend line बनाओ. Okay. Right? तुम्हें लंबा trend, अब ये जैसे this is showing a trend from this here 13 सितंबर से, but if I want to just see a trend from 4th February, this will be my trend line. So how do we determine कौन सा वाला हम लोग को यूज करना चाहिए? Your time frame for trading, how long you want to take, what is your idea behind taking the trade? Do you want to take it for a 1 month? Do you want to invest, or what is the purpose for which you are seeing the chart? If you're doing an intraday trading, you don't need to do that for a very long time period. The purpose is to always to carry the trade as long as possible. No, the only thing is you might not have that much capital to carry. If you take 2-3 trades and a 5 lakh, 6 lakh capital, can you take all the trades at the end of the day? No, you can't. So you'll have to make a decision, no, which one to exit, which one to keep. So accordingly, you will take the trades. You can always make a decision whether you want to carry it or not. But that decision you take in the end of the day, ना? थोड़े ना पूरे दिन देखते रहते हो ट्रेंड लाइन, डेली चार्ट का और वीकली चार्ट का. And you had mentioned several times about hedging the trade if it's going good at the end of the day. Yes. So let's say it's merely buying an at the money PE call. See, like trade only we discussed. Okay. So at the end of the day, you would have been in good profit, right? You could have just hedged it. तो next day तुम्हें टेंशन ही नहीं होती, वापस रीएंटर ही नहीं करना पड़ता, गिरने दो साले उसको, जब गिर रहा है तो पैसे बन ही रहा है. Sir, so that's what my question was. Just we can buy a at the money put, or how to hedge it? At the money अगर खरीदोगे और sideways हो गया तो तुम्हारा पुट में लॉस होगा. हाँ, अगर especially in the second half of the month तो पुट में लॉस हो जाएगा. So मतलब डिपेंड करता है ना, वो पुट खरीदना है या पुट बेचना है या कॉल बेचना है. All of this is subjective decision based on your risk appetite and the way you trade and how you expect the stock to behave. There is no one single right answer. Sometimes I buy puts, right? कभी कभी मैं पुट खरीदता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ भाई प्रीमियम कम है, से एंड ऑफ द मंथ है and all. So it's better for me to just buy a put. Start of the month I'll prefer to sell because premium is high.
So can you repeat once again? So you're saying कि अगर second half of the month है तो we can buy a put at the money put in order to hedge. Yeah, because Whereas premium if कम it is होगा the ना. start of the month, we can sell the call. Yeah, because you selling a premium high रहेगा ना, पूरे 30 दिन का premium है उसमें. Okay, right. Like in case of TVS Motors. TVS Motor, to be honest, मैंने वो trade नहीं लिया था. I had just bought futures. I gave that trade in options to you guys because उसका वो कम था. Options trade में margin कम था. I had bought futures. Anyway. सर एक रिक्वेस्ट है. सब आप सुबह में ट्राई किया करिए ना, हमें 1-2 ट्रेड एटलीस्ट रोज देने का, बिकॉज सर वो प्राइस एक्शन का क्लैरिटी ना आपका प्रैक्टिकल लर्निंग से ही आएगा. लाइक जैसे अभी ये वीक में आपने प्रैक्टिकल मैं करूंगा तो आएगा, तुम करोगे तो आएगा. नहीं सर, I agree with him actually. If possible, sir, please request है. सर वो सब बहुत theoretical रह जाता है. And see, honestly speaking, end of the day, your accuracy is good. तो यार वो profit में भी फर्क पड़ता है. मतलब you know, like it gives more confidence, and end of the day, nothing better than showing green on your But I give you P&L, guys right? trade when I feel it is there. हाँ, but जैसे ये वीक पूरे वीक I cannot give every day trade. देखो क्या होता है ना, कई trades ऐसे होते हैं कि I give you guys trade after I take it. To be very honest. Okay. Now after I have जैसे आप लाइव taken ट्रेड it, में करते थे. that's different. Live is different because I'm doing it along with you guys, so it is different. But really जो मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, पहले मैं जाता हूँ, खुद लेता हूँ, ठीक है. जब मेरा ट्रेड ऑर्डर फिल हो जाता है, जब तक तब मैं टाइप करता हूँ कि हाँ ये लेना है, इतने पे लेना है. Now तब तक if I see that the trade has moved, I don't give you. If I still see there is a chance, then I give you. Sir, last actually 2-3 weeks से हम miss कर रहे हैं आपके trades. Actually, he's right, sir. We are missing your trades from the last 2-3 weeks, and it will be really helpful, especially in the middle week, sir. As Tuesday, Wednesday onwards, अगर 1-2 trades आपके हो जाएं, I understand कि उस केस में हमारा SL बढ़ जाएगा, but still it will give a lot of confidence, sir. ठीक है यार, बस मैं ट्रेड्स कम दे रहा था जानबूझ के 1-2 वीक से. ठीक है. हाँ सर, अब आप हमें वो टेस्ट पीरियड से निकाल करके हमें He's right, sir. वो हमारा चलता रहेगा सर. लर्निंग तो ऑब्वियसली वो आपके साथ जुड़े हैं तो लर्निंग तो होती रहेगी सर. Definitely. That is our commitment that we definitely would love to learn. रौनक is since start पता ही नहीं रौनक क्या सीख रहा है, मुझे आज तक खुद नहीं समझ में आया. 10 लाख के कैपिटल को 3 लाख कर लिया बंदे ने. But he's making money now, I think. रौनक मन रहा है. हाँ सर, रौनक कर रहा है अभी. रिसेंटली उसने कुछ ट्रेड में वो थोड़ा सा अलग हो गया था, बट आई थिंक ही स्टार्टेड डूइंग इट अगेन. वन टाइम आई रिमेम्बर, यू नो, हम लोग रौनक का देख के ही कर रहे थे. वो बहुत अच्छे पैसे बनाता था, बहुत मस्त. वो अचानक से उसने पता नहीं कैसे लॉस कर लिए, और then he started struggling because the capital was low. Sir, actually January first half and that December first last half जो था, second half था, उसमें सभी को कुछ ना कुछ mistakes, people lost a lot of money. That is yes, I understand, but let that not carry in everyone's mind. I think because we are in a trending market now, especially, and there is money to be made with your guidance, so we would really appreciate, sir. और सर जैसे I'm purely talking, जैसे थोड़ा selfish होकर के I'm talking for me and Pratik point of view, हम लोग ने अभी ज्वाइन किया ना, तो सर हमें को और रहता है कि आप ट्रेड दो तो यार हमारा भी कुछ बने, एंड मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है. लाइक ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस आने से हमें भी और सीखने का वो रहेगा. वैसे मेरा मेनली लास्ट वीक थोड़ा सर वो बिजी भी था, तो इसलिए भी नहीं दिया मैंने काफी ट्रेड्स, और मेरे काफी सारे मीटिंग्स थे. मार्च से पहले हमें मार्च एंड से पहले बजट फाइनलाइज करना है ना ईयर का. So just one more point. You know, sometimes if you can just give us guidance कि market कैसा लग रहा है and stuff like that, what kind of trade you are looking at, तो उससे क्या होगा ना, we can also I don't think... give the Pratik for a reason. Yes sir. Because my view will change. And 5 बार मैं बोलूँगा अच्छा मेरे को लग रहा है अभी बुलिश है, फिर मैं बोलूँगा कि बेरिश है. होता क्या ना, when I say something, I have to give it the reasons also. On chat only I can say कि हाँ market looks bullish. Now what everyone else is thinking कि अच्छा सर ने बोला market is bullish,
तो खरीद लेंगे, कहीं उनका लॉस भी हो रहा होगा तो बोलेंगे नहीं नहीं सर ने बोला बुलिश है, रखते हैं अभी इसको, यू नो दैट इज द प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई आई डोंट गिव दैट व्यू, बिकॉज अगर व्यू दो तो फिर उसको बैक करो कि ये रीजन है, बिकॉज देन रीजन देने का फायदा क्या होता है कि द मोमेंट यू गाइस नो कि हाँ दीज रीजंस आर नॉट वर्किंग, यू नो कि नाउ द व्यू इज नॉट वर्किंग, बट जस्ट गिविंग अ व्यू बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर Yes, एवरीवन because एल्स. if you can make like a chart with a trend line, you know, whatever you're thinking, तो क्या ना हम लोग को sir we will get to learn a lot more, right? Because Yes, अभी I agree with Prateek थोड़ा sir. thought process वाला समझ में आना मतलब we want to know how you think sir, मतलब वो basically थोड़ा hand holding में ना देखते so हैं like यार. if you can make the trend line, or if you can make the supply zone demand zone, so just very basic, you know, so that we can learn. Maybe we don't trade based, we can all collectively understand that okay sir is just sending something to teach, learn with it, but don't basis your trade on that, right? If we can all develop that understanding, we can learn a lot more on a daily basis. So चलो we'll see how. Else you can also post a couple of charts, sir, in the day that this is what you're looking not at. possible, Gautam. I really have no time for that. सर हम Posting लोग charts बात and में all. निकल गया सर, लेकिन एक दो बाइस छूट गए शायद, मुझे लग रहा है. मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरा मतलब मुझे बाई लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और जी भी बाई लग रहा है. What happened? अच्छा गोदरेज प्रॉपर्टीज बाई मार्क किया है आपने, अच्छा. और जी में भी शायद बाइंग दिख रहा है मुझे, मतलब इज जी है बाई? नहीं जी कहाँ भाई है यार, साइडवेज है. so brigade All our buy is above Thursday night, by the way. ICICI is also buy. PFC is a clear cut buy. जरूर खरीदना यार. इस PFC is a very good buy. Buy it. Definitely buy it. L&T is also a very good buy. रेजिस्टेंस जोन के पास है बोल के छोड़, बुलिश है बहुत दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन के पास है बोल के छोड़ दिया था मैंने. हाँ बट अच्छा खासा इसमें तुम्हें मिल जाएगा, which still there is a good amount to be made. 72 पे है, 74 ₹2 क्या ऑलमोस्ट. इसका कितना 8,000 या 9,000 का लॉट साइज है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे. Sir, can you take a look at HDFC Life again, sir? HDFC Life किधर गया, इधर ही कहीं था. It is also a buy. Okay, इसमें बस मैंने buy इसलिए नहीं दिया कि 1, 2, 3 ऑलमोस्ट इक्वल लेग कंप्लीट हो गया, इसलिए I did not get. But it's a buy. If it goes above this, you can buy it. I'm actually giving only those which are better in terms of giving a good return. See, like I said, now price action is something. There is a problem with price action that it will give you a lot of trades. So you have to be mindful in terms of taking some and leaving some. So जब इतने सारे trades आ रहे हैं, to take the best ones. Like SRF is good. I can give a buy and a sell in almost every stock, but that will become very confusing. How many trades you will take? Pi is also still a buy. Pi was a good call last week also. Yeah, sir. Pi Industries में टारगेट क्या बोल सकते हैं हम लोग? जब तक ऑलमोस्ट टारगेट हो गया इसका. हाँ ठीक है, टारगेट इसका हो गया है, but again if it goes above it, still you can buy because closing is very good, so should continue up. Okay, in that case if it continues, trend line extend करने का जहाँ तक जाता है, and क्योंकि rising trend line है, so target can actually be much higher. Sir, it's forming a W over here. What? It's forming a W over here. W बोले तो? डबल बॉटम, सॉरी. अच्छा हाँ, मतलब ऐसा ही है, डबल बॉटम है, वहीं से रिवर्सल हुआ. तभी तो हमने पहले बार ट्रेड लिया था, तब से चल ही रहा है अभी तक.
देखो भारती एयरटेल में आई एम नॉट गिविंग बाय बिकॉज काइंड ऑफ a doji, right? Leave it. Still, this is also a buy, but leave it. This is also a buy. सर जितना मैंने देखा है सर कि आप अपना जब स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखते हो तो यू आपका एक तो फंडा है दैट यू डोंट एंटर ऑन अ वेरी बिग कैंडल बिकॉज द स्टॉप लॉस बिकम्स बिग एंड सर और कुछ हैक है क्या हाउ टू कीप द स्टॉप लॉस स्मॉल मतलब हाउ डू यू काइंड ऑफ मैनेज टू फिगर आउट द 8-10 पॉइंट स्टॉप लॉसेस देखो स्टॉप एक तो लॉस छोटा पेशेंस रखने होगा में रिस्क थोड़ा होता है कि वो हिट हो जाए. So thing is with me, I am comfortable losing a small amount of money, but most of the time I don't lose it, so it's okay. There is no other hack. Just I look at the trend, and then wherever I see a small stop loss, small reversal, I prefer taking entries there. If I'm wrong, I just lose a small amount of money. If I'm right, I end up making good money because I have good lot size, right? So मेरे को इजी रहता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग एंड एग्जिटिंग. 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने का, 20 लॉट खरीदने का, जैसे ही 10 पॉइंट बना विच इज इजी टू डू, आराम से 10 लॉट निकालने का. अब लॉस हो ही नहीं सकता है. उसके बाद अगर कंटिन्यू हुआ देन आई मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ इट फॉल्स आप तुरंत से फिर कॉस्ट पे ट्रेड कर लेते हो ना सर? या Sir, a lot of the trades that we are looking at today, they are all trend continuation trades. Is it? यस अब ट्रेंड वो कंटिन्यू ही होगा, ऊपर ही जाना है बस. जब भी नीचे आएगा खरीदना है. इसीलिए सेल कॉल्स देने में अब जैसे ये भी घबराहट हो रही है. इंडिगो भी सेल ही है इसके नीचे, बट प्रेफर टू लीव ऑल दीज सेल्स. ये भी सेल है कैन बैंक. बट कैन बैंक यू कैन sell it. Can bank is a good sell below that Thursday's low. Reliance छोड़ दो. I don't like trading this. ट्रेंड में क्या पैसे बने थे. ट्रेंड किसी ने लिया था? सर कैपिटल ही नहीं था. I was Sir, I have taken trend but in cash, not futures. So it doesn't permit my risk also. I still have it. Still holding it. The best part is I have hedged it, so Saturday Sunday में तो कुछ पैसा ऐसे ही आ जाएगा 2 दिन का जो प्रीमियम लॉस होगा. Ambuja is a sell. सर इंडस्ट हाउस मुझे सेल लगा था. नहीं इंडस्ट हाउस साइडवेज है. साइडवेज है, छोड़ दो. डबल बॉट अगर 4 आवर्स पे देखे तो डबल टॉप है लेकिन छोड़ दो अभी इसको. तो ट्रेंड जैसे आपने इंडस्ट हाउस क्यों मैं छोड़ने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मूवमेंट साइडवेज है. तो यहाँ से ये गिरेगा बट यहाँ तक मैक्स मेरे लिए टारगेट रहेगा. unless it breaks the recent low. Yes. So you can take, but you should try to take off some money here. Okay, if you can do that, then yeah, go ahead, sell it. The problem is ना इसमें कि हो सकता है कि खुले ही यहाँ पे, तो फिर क्या करोगे? Apollo Tyre is a buy. I used to trade a lot in HPCL, BPCL. I have just stopped it. जब से BPCL का गवर्नमेंट ने नाटक शुरू किया है. सर ये BL ने लास्ट वीक अच्छे पैसे दिए थे. हाँ, BL के वो गुड मनी. अब इसमें इस वीक मत खरीदना. And BL was a must buy we gave. Done. IEX कैसे दिख रहा है? कौन सा? IOC. नहीं, IEX. I think यार गिरेगा ये. 1-2 हुआ है, थर्ड नीचे आना चाहिए. Almost at the trend line.
That's why I didn't give the trade. But it should fall only. मन्नापुरम में चार्ट देखो मेरे को पता है, दिख रहा देखो ट्रेंड लाइन बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे दिख जाता है। ये टाइम लगेगा बट यू गाइस विल आल्सो हैपन। सर आपने कैसे बोला 1 2 एक बार प्लीज खाली समझाएंगे वो? I said 3, ये हम पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 में, 3 leg moves, you know, counting bars, 10 bars, 9 bars, there are some number of bars after which a reversal and continuation happens most of the time, so we'll read all that. Okay, this is 1 2 3 should come, but anyway, overall we are complete. Go ahead, revise it once, look at the charts, pick up 3 4 डेली का, मतलब वीक का बना के रख लो कि ये 4 मुझे सेल साइड में है, 4 5 बाई साइड में, एंड फिर जब मार्केट वीक दिखे तो वो सेल वाले चार्ट खोल के देखो, जब मार्केट रिवर्सल पे आए तो बाई वाले खोल के देखो। दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड। ठीक है, पहले से ही अपने वॉच लिस्ट में रख लो कि हाँ ये 4 मुझे खरीदने हैं, ये 4 मुझे बेचने हैं। उसके बाद निफ्टी स्ट्रांग दिखे, भूल जाओ सेल वाले, सिर्फ बाई वालों पे फोकस करो। निफ्टी वीक दिखे, भूल जाओ बाई वाले, सेल वालों पे फोकस करो। ठीक है, जिस दिन निफ्टी का रिवर्सल दिखे फिर से भूल जाओ सेल वाले, फिर बाई वालों पे देखना शुरू करो। सो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड। ओके सर, मदरसन सुमी छोड़ दिया मदरसन सुमी कुछ नहीं है, मुझे तो मतलब बाय दिखा ऑन प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तो नहीं मदरसन सुमी में छोड़ दो इसको, वेरी बैड स्ट्रक्चर। सर गुजरात गैस भी हो गया है, नहीं गुजरात गैस मार्क किया होगा ना यार मैंने, अगर कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं है। सेल हो सकता है अगर रिसेंट लो के, हाँ बट लीव इट, नॉट अ वेरी गुड चार्ट हियर, you can sell it, okay, but sell will be below this, not below this, not below Thursday, below Wednesday's low, okay, but it's almost long term bottom है उसका, ये almost है। I don't feel कि it will go down, it's a major support, नीचे आके should actually show a reversal now, that's why no calls in this on the sell side. बट ऐसे भी पॉसिबल है कि ये सपोर्ट तक ही इमीडिएटली मंडे ट्यूसडे आ जाएगा एंड देन इट विल टेक अ रिवर्स। ऑलरेडी सपोर्ट पे ही है ये सपोर्ट पे ही है, एग्री, ऑलरेडी सपोर्ट पे है इस पे, इसीलिए इस पे कोई ट्रेड नहीं दिया, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। आई डोंट थिंक इट विल वायलेट दैट एंड कंटिन्यू गोइंग डाउन, बिकॉज अगर इसके अब नीचे आता है तो फिर यहाँ तक आएगा 400। so that means there are quite possibilities that it can go upside. हाँ बट अभी आपका कुछ दिख नहीं रहा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है because of lot of red candles, right? Yeah, it's a lot of red candles, but so many red candles is still no decisive move, it's just almost sideways. This is the range in which it is trading, right? सर एक भाई नेशनल एलएम बता दो, आपने बाय क्यों नहीं किया? सेल है, हेडलाइन भी पिक किया नेशनल। सेल ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये इसका साइडवेज मूवमेंट है डाउनवर्ड साइड में। अब इसके अगर नीचे जाता है थर्सडे लो के तो इट विल बी अ सेल, द सेम टाइम इट गोज अबव दिस इट विल बी अ बाय। सो लेट्स सी which way it goes. It will be a better sell, bad buy, because this is a red candle, so goes above it, it will be a buy but not a better buy. It goes below this, it's a very good sell. ठीक है, एक्चुअली अभी इंडियन शुड एक बार आपने बोला था भाई वो जो हम लोग वीकली वेबिनार में जो करते हैं वो खुद से करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आई फील लाइक मतलब एटलीस्ट 50-60% थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लाइक हाँ तो बस 50-60 अभी कर रहा है, थोड़े दिन में 100 हो जाएगा। जरूरी नहीं है यार सब मैच करना, ऐसा थोड़ा ना है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, हो सकता है कहीं तुम सही हो, so you don't have to match it, you just see the results in your P&L. If you are making money, that's it, that is what matters. थोड़े ना बेंचमार्क हूँ मैं।
So at the same time अगर national aluminium मतलब metals का जो हम लोग का ये था index था वो resistance के पास है. हाँ, तो वो अगर क्रॉस कर जाता है तो नेशनल एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत भी बुलिशनेस दिखेगा तो इट विल आल्सो बिकम अ बाय. सर एक दूसरा क्वेश्चन है सर, अभी जैसे 2-3 हफ्ता पहले जब एवरीथिंग वाज फॉलिंग, आपने बोला जब सब कुछ रेड दिख रहा है इट इज द टाइम टू बाय. तो सर कन्वर्सली अगर अभी सब कुछ ग्रीन दिख रहा है तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई टॉप्स लाइक रेड सब कुछ था. नहीं ऐसा नहीं है आफ्टर अ लॉन्ग बेयर मार्केट, राइट? अभी तो स्टार्ट हुआ है. वो तो रेड दिखने का रीजन था ना भाई, वो कितने दिनों से तो मार्केट गिरे जा रहा था. वो बात अलग थी. एंड दिस वाज अ मेजर सपोर्ट. सो एवरीथिंग वाज रेड बट एवरीथिंग वाज एट सपोर्ट. दैट्स व्हाई वी सेड वी विल बाय. राइट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. अब तो ऊपर जाना है. अभी पैसे डालो, देखो अब सीधे. अब यहाँ एक बार इस बार क्रॉस करेंगे 18,600 तो सीधे 20,000 लगेगा. चलो. But then you were right about buying the April future, right? Yeah, I am already making money in that. देखो ऑलमोस्ट आधा देखो कवर हो गया. इस फॉल का आधा कवर हो गया ऑलमोस्ट, राइट? तो होता ही है, रिस्क तो लेना बनता है भाई. बिना रिस्क लिए पैसे नहीं बनेंगे. चलो गाइस, एंजॉय योर वीकेंड एंड लेट मी ट्राई टू अपलोड इट बिफोर 10. इतना टाइम लग जा रहा है ना इसको अपलोड करने में. ये टाइम में इट्स ऑल लॉट ऑफ बाइज एंड कंपैरेटिवली few less sells, more buy, but Monday Tuesday can be a little bit down. Okay. Overall maybe मतलब ending sideways ही हो, week का ending sideways ही रह जाएगा. See, like I said, na, have 4 or 5 buys, have 4 or 5 sells. Keep it in your watch list. When Nifty is weak, focus on the sell sides. Okay. And the problem is you guys are not communicating with each other. There are like 20 people in the group. Okay, if everyone does this, you guys can help each other out. कह रहे देखो मैंने ये डाला था, ये गिर रहा है, you guys should buy, and everyone can go ahead and buy and sell that. But I don't see that happening. The only reason to have a discussion group is that people communicate, but people don't. I cannot force people to communicate, but this is what you guys should do. चार रखने का, किसी के तो 1 और 2 स्टॉक होंगे जो मूव करेंगे, एंड दैट पर्सन शुड देन से क्या देखो ये मैंने सेल किया, इतने पे किया है, दिस इज आई थिंक वेयर यू गाइस शुड गो अहेड बाय और सेल. देन एवरीवन कैन मेक देयर ओन डिसीजन इफ दे वांट टू और दे डोंट वांट टू, बट दैट डजंट हैपन. चलो, anyway, take care guys, enjoy your weekend. And I will try to upload it ASAP. Okay. See you guys. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thanks everyone. Yeah, thanks. Bye.